Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. I, Zarna Patel, welcome you all in today's General Awareness session. So, in your previous General Awareness session, you have already learned about my school and my classroom. So, let us quickly revise them. My school. My school is the place where we all learn new things every day. My classroom. This is a place in the school where you and your classmates study. In today's session, we will learn about magic words and good manners at school. So, let us start, kids. First, we will learn magic words and I will show you how these magic words can do wonders in your life. So, let us start. Now, for example, you are doing your homework and you need some colors and you are not having your colors. आपके पास colors नहीं है तो आप किससे मांगेंगे? हाँ, आप वो कलर्स मम्मी पापा से मांगेंगे, राइट? तब आप कौन सा मैजिक वर्ड यूज़ करेंगे? आप कैसे मांगेंगे कलर्स? आप कहेंगे प्लीज़ मम्मा कैन यू गिव मी कलर्स। तो बच्चों, आपको याद रखना है से प्लीज टू रिक्वेस्ट समथिंग। नाउ योर मम्मा हैज गिवन यू कलर्स। तो आप मम्मा को क्या कहोगे? आपको कलर्स चाहिए थे और मम्मा ने आपको कलर्स दे दिए, तो आप कौन सा मैजिक वर्ड यूज करोगे बच्चों? यू विल से थैंक यू टू मम्मा। कौन सा मैजिक वर्ड यूज करेंगे? थैंक यू। से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन। अब आप बाहर खेलने के लिए जाते हो अपने फ्रेंड के साथ, है ना? आप जाते हो ना अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेलने के लिए और गलती से आपसे आपके फ्रेंड को लग जाती है ना? तो बाय मिस्टेक यू हर्ट योर फ्रेंड। सो विच मैजिक वर्ड यू विल यूज? यू विल से सॉरी टू योर फ्रेंड। क्या कहेंगे? कौन सा मैजिक वर्ड यूज करेंगे? You will use sorry. If you hurt someone, you will say sorry. Now kids, let us imagine कि आपके पापा फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और उसी टाइम पे आपको पापा को कुछ कहना है। तब आप कौन सा मैजिक वर्ड यूज करोगे? आप कैसे पापा से बात करोगे? तो आप क्या कहोगे पापा को? एक्सक्यूज मी पापा, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या कहोगे बच्चों? एक्सक्यूज मी पापा, कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ? एंड चिल्ड्रन, यू कैन यूज दिस मैजिक वर्ड एक्सक्यूज मी व्हेनेवर यू स्नीज। हक्ची। तब आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी। और जब भी आपको खांसी आती है तभी भी आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी। चिल्ड्रन, ट्राई टू यूज दिस मैजिक वर्ड लाइक एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज in your day-to-day life and see how it creates wonders in your life. Now we will learn the topic of good manners at school with the help of flashcards. What do you see over here, children? Yes, the girl is sharing her compass box with the boy and the boy is saying thank you to the girl. Right. So children, always remember to use magic words like sorry, thank you, please whenever needed in the class. We should be always
helpful to others in the class. Like in this flashcard, the boy is helping his injured friend. Wow, what do you see in this flashcard? Yes, the boy is having a box full of chocolates. And what is he doing? He is sharing few of them with the girl. So children, always remember the golden rule of sharing. Children, we should always greet our principal ma'am, supervisor ma'am and teachers in the school, right? Whenever we meet them, we must say, "Good morning, ma'am." Listening carefully to what teacher is saying is a very good manner, children. In the class, whenever you want to say something, you have to raise your hand. Like in this flashcard, the children are raising their hand before saying something. You should always be polite with teachers and classmates in the school. तो बच्चों, हम कौन सी गुड मैनर फॉलो करेंगे स्कूल में? हम सबसे नम्रता से बात करेंगे. We should always keep our surroundings clean by throwing the trash in the dustbin. हमें अपने क्लास और स्कूल को साफ सुथरा रखना है बच्चों. Wow, what do you see in this flashcard, children? Yes, all the children are playing on the slide without pushing each other, right? So, you should always wait for your turn. Now, I will introduce you all to the worksheet of good manners. Okay, so let us start. In this worksheet, you have to tick the pictures which shows the children following good manners, right? So, let us see the first picture. In the first picture, the boy is helping his injured friend. In this picture, children are taking turns while playing on the slide. In this picture, all the children are all together on the slide. In this picture, what is happening? The boy is sharing chocolates with the girl. And children, is it a good manner to share? Yes. Now what is happening in this picture? The boy is using the dustbin. And in the last picture, children are throwing bits of paper on the floor. I hope children, through this session, you have very well understood the topics of magic words and good manners at school. For today, bye kids. I will see you tomorrow. Till then, take care and keep smiling.